with this boost now, it's time for revision, right? कि इतना सब कुछ हुआ है तो there needs a revision for, and I am here for just to say help you to understand the importance of revision. You must have gone through the scripts of many toppers. Yes, देखा ही होगा आपने, सुना ही होगा, इंटरव्यू स्क्रिप्ट है या एक सक्सेस वाली स्क्रिप्ट है. And one of the things that you might have observed, it's revision. Yeah, they focus more on sources and revision. So the thing is, revision is absolutely important. It's just because we are supposed to go through this under the sky everything kind of fact. Yes, UPSC. अब सब कुछ पढ़ोगे तो सब कुछ याद तो होना है नहीं. And we are not like a विवेकानंद, right? कि पता चले एक बुक ले ली आपने, पढ़ ली और पेज के थ्रू याद भी हो गया. Absolutely not, right? So just having a limitation as a human being, the important thing is we have to revise what we learn for. Anil sir, right? Swaroop sir. So he told you about that. You should understand the thing first, right? Before learning. The thing is, you understand the thing, should revise the thing, and then you should learn the thing. Right? That is what a kind of sequence. Now, have you heard about a success mantra for UPSC? बहुत सारे होंगे वैसे तो मार्केट में, राइट? बहुत सारे होंगे. तो 2R वाला रिलेशनशिप सुना है आपने? 2R नहीं सुना है. सुनने की भी कैसा हुआ, भी कुछ बड़ा होगा. तो 2R, revision and result. That this two shares a direct proportionality, right? The more you revise, the more your chances to say clear this examination. तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा chances है that you will represent yourself in a better way in examination, and ultimately you will score more in the examination also. You might have you remember those time or that time कि जब कभी देखो क्लास में न्यूटन्स के लॉ कभी पूछे जाते होंगे, राइट? पूछते होंगे स्कूल डेज में भी और इवन कॉलेज डेज आल्सो, एंड दैट टाइम यू आंसर दैट थिंग. Yes, Newton's first law is what this, Newton's second law is F equals to ma, third law is like to every action there is equal reaction. कोई satisfaction था, right, to answer that thing? And do you remember why you were able to answer that thing? It's not only due to the fact that कि आपने वो एक बार सुना है. No, you have, say at first you hear it, right, then you repeatedly read it and then revised it also. तब कहीं जाकर अब याद है ना वो फॉर्मूलाज, न्यूटन के कोई 3 लॉज है ये तो पता है मैं एटलीस्ट, राइट? So absolutely revision is absolutely important thing, right? Now many times student ask me about that the difference between रीडिंग एंड रिवीजन. कोई डिफरेंस है इसमें? तो फिर इंपॉर्टेंस और समझ आएगा ना. रीडिंग और रिवीजन कोई डिफरेंस है? व्हाट एग्जैक्टली? इट जस्ट बिकॉज ना स्टूडेंट्स मेनी टाइम दे गेट कंफ्यूज्ड अबाउट, सर मतलब मैं रीड कर रहा हूँ या रिवाइज कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता. एंड इफ पॉसिबल इफ यू आर बिगिनर और से इन बिटवीन स्टेज आल्सो और पॉसिबली एट द लास्ट स्टेज आल्सो, so you should know what it means or what is the difference between reading as well as revision. है कोई difference? क्या होता है? Just like say reading does not mean you are revising. It could be like you are just reading it but it's not getting in. It's not getting in. Okay. So while revising you are not getting something or anything as such. Is not happening unless and until you are actually grasping something out. And reading is like there is no possible surety of outcome. Surety of outcome. अच्छा हाँ, yes, Ruturaj, yes. For me, the reading means when we are reading a page, we find out what are the things written. When we revise the important things what we are studying. What is the important content
this we should focus more. गुड, देखो वर्ड में ही मीनिंग है. रीडिंग, राइट, री एंड रीड, दैट मीन्स व्हाट, यू आर रीडिंग दैट स्टफ अगेन. अब रीडिंग मतलब ये लाइन बाय लाइन रीडिंग है. यस, सो से फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर, फिफ्थ, 6 टाइम, राइट. कुछ कुछ लोग होते हैं और भी पढ़ लेंगे, PSR सर ज्यादा पता है सर को. तो ये हो गया रीडिंग, दैट यू कैन रीड दोज स्टफ्स ऑन ए लिमिटेड इंस्टेंस. यस, बट व्हाइल रीडिंग यू आर हाईलाइटिंग समथिंग, कुछ हाईलाइट कर रहे हो, कुछ की पॉइंट्स है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, राइट. और से फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में कोई टर्म है, यू आर साइमल्टेनियसली हाईलाइटिंग इट. नाउ देयर कम्स ए रिवीजन, रिवीजन, राइट. तो आप क्या कर रहे हो, एक व्यू दे रहे हो उस पर, राइट, बट यू आर डूइंग इट number of times. What you have highlighted, you are only revising that stuff again, you are only reviewing that stuff again, and that is what the difference. So guys, reading can be possible say few number of times, but revision must be 10 times, 20 times, 50 times, 100 times, thousands of times. It depends on, and believe me, the more you revise, the more you understand and more you can reflect in examination. That is absolutely, देखो कम पढ़ोगे तो that's okay, right? But the thing is, what you have understood, right, you need to revise it again and again. Then and only then you will able to say secure a good rank, okay, or at least what you want to. तो benefits तो very first benefit of revision, importance है ना, right? तो benefit, the very first benefit that revision will give you, it's a kind of conceptual clarity. Even if in class से अगर कोई point अगर रह भी गया है, okay, but if you have just imagine कि आपने फिर से रिवाइज किया है, don't you think कि कुछ points जो मिस हो गए थे लेक्चर में वो फिर से याद आ जाएंगे, right? फिर से कभी उसको रिवीजन कर लोगे, again those points will be running into your mind and you will find that thing is now getting more clearer and more crystal clear to you, right? So the first benefit that revision offers to you is, it is say helping you to ensure a good clarity over the concept. Second thing, no doubt you know in the examination almost 4000 words you need to write about. Yes, एक सिंगल पेपर में in 3 hours, sir also told about, right, कि 3 hours में आपको almost 4000 words write करने हैं. Do you really think कि 4000 words write कर सकता है, just like a humanly task है, just like with a quantity, just because UPSC has given the thing, the content of your answer is more important than its length. तो अब अगर length भी कम रखनी है और content भी improve देना है, तो ऐसे केस में तो आपको वो स्टफ या स्ट्रक्चर तो माइंड में चाहिए ना, राइट? व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इट अबाउट एनीथिंग, से फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर है, ओके, और से फॉर एग्जांपल चाइना यूएस राइवलरी, और व्हाट द काइंड ऑफ इशू, इंडो पैसिफिक इशू. In that case, you should have a kind of structure clear in your mind, and that is what possible in the case if you are writing it again and again, if you are revising it again and again. तो फिर पता है इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो फिर पता है मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे. नो डाउट बेस्ड ऑन क्वेश्चन कुछ मॉडिफिकेशन रहेंगे, बट अल्टीमेटली इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडीज यू विल फाइंड समहाउ फिक्स्ड, and that is what absolutely this revision will help you to seek for. It just because 3 hours 4000 words, just to remind guys कि जब हम स्कूल डेज में ऐसे लिखते थे ना, ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता था वो ऐसे भी लिखना, वो भी कुछ याद कर कर जाते थे हम के काइंड ऑफ मेमोराइजेशन, राइट, कि ये है इफ आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, राइट, तो फिर वो याद कर लेंगे, जाएंगे एग्जाम में लिख देंगे, भूल भी जाएंगे. वो कितने वर्ड का होता था, डू यू नो? इट्स अबाउट 300 to 400 वर्ड्स. यहां लिखने हैं विद इन 3 hours आपको 4000 वर्ड्स, एंड द सेम पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट आवर ऑल्सो. फिर से 3 घंटे में फिर 4000 वर्ड. सो इन ए वन डे यू आर सपोज टू राइट 8000 वर्ड ऑलमोस्ट. अब वहां सब जाकर तो सोच नहीं पाओगे, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेमोराइजेशन, I am talking about revision. Okay, so the more you revise,
more you able to remember, and ultimately more you able to reflect yourself. Okay, so that is what say about the revision. And you might have heard about that proverb also. Suna hai about revision? No. That you should eat less but chew more. You should talk less, but say more. You should read less, revise more, and score more. That is what, as simple, say the importance of revision. Okay, so with this word, thank you guys.